Federation on Neurological Disorders. This is the first World Brain Day. It's being celebrated in Latin America, in Europe, in America, everywhere it is being celebrated. In some places it is being celebrated for a few days. So this is basically to tell you more about neurological problem. I'll show you what are neurological problem and how they can be taken care of. I'll give welcome and introduction, and then we will have Dr. Raj Shakir, who is the President of World Federation of Neurology. He's a close friend. I requested him. He will be speaking to us from London. He has already sent his 3 minutes video. If he doesn't come, then we'll show that. But he's already online, I think. Then we will have Dr. Mohammad Wase. एक मेरे भाई पीछे कर लो आकाश, एक तो सीट खाली कर लो. Dr. Shamsher Dwivedi is head of department at Fortis Gurgaon. मैं शमशेर द्विवेदी, मैं जैसा सर ने कहा कि मैं डायरेक्टर और एचओडी हूँ फोर्टिस गुड़गांव में न्यूरोलॉजी विभाग का, और प्रैक्टिसिंग न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और ब्रेन स्पाइन से रिलेटेड. दैट्स द मोटो, बेटर ब्रेन्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड. कभी कोई प्रॉब्लम होती है उसको इग्नोर नहीं करिए, आप रेगुलरली डॉक्टर को कंसल्ट करिए. ब्रेन हेल्थ सुप्रीम वेल्थ, यूज योर ब्रेन टू प्रमोट बेटर ब्रेन हेल्थ. ये ब्रेन की पिक्चर है जो कि आप देख सकते हैं ऊपर से लेके साथ में कि जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड फ्लो होता है ब्रेन को, जिसकी रुकने से स्ट्रोक हो जाता है, या लेग में हो तो वीकनेस हो सकती है, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ह्यूमन ब्रेन में मिलियंस और बिलियंस न्यूरॉन्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड है. लाइक इलेक्ट्रिकल वायर जैसे यहाँ जा रही हैं, ऐसे ब्रेन में आपस में कनेक्टेड है. मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे. तो ये सब उस वायरिंग का कारण है, नेटवर्किंग का, जिससे हम इसके बारे में सजग रहते हैं. जो जितने न्यूरॉन्स हैं अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका जो डिस्टेंस है इक्वलेंट टू ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ 4 टाइम्स इन अ रो. पूरे संसार का चक्कर लगाओ तो 4 बार लगाओगे तो उतनी वायर्स के बराबर लेंथ रहेगी उसकी. और इट इज थॉट दैट देयर आर अबाउट 8 बिलियन न्यूरॉन्स विद इन द ह्यूमन ब्रेन. जो भारत की पॉपुलेशन है 1.3 या 1.4 है, पर यहाँ देखिए ये 8 बिलियन है. इतने सारे सेल हैं, 80 गुना भारत की जनसंख्या के. इतने सारे हमारे ब्रेन के अंदर सेल हैं. देखिए कुदरत ने हमें कितनी एक तोहफा दिया हुआ है, ये उपहार दिया हुआ है. देयर आर अबाउट 10 trillion connections between these neurons which help us to read, write, watch, learn, plan, think, feel, move and solve problems on a daily basis. जिसकी हम इम्पोर्टेंस नहीं समझते. जब वो थोड़ा बहुत खो जाता है तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस नजर आती है. Our brains are at a crossroads now, so we have to take care. One out of 3 of us will get dementia or stroke during our lifetime. खास तौर पे 60 साल के ऊपर. This can occur at any age, any time, anywhere. Both disorders are preventable, treatable for most part. खास तौर पे लाइफस्टाइल की वजह से होती है प्रॉब्लम, जिसको हम अगर ध्यान रखें तो ये लुक आफ्टर कर सकते हैं. डिजीज क्या क्या है ब्रेन की, जिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. जैसे मैंने कहा डॉक्टर गोरती से आप स्ट्रोक का पूछिए, डॉक्टर निलेश से एपिलेप्सी का पूछिए. डिप्रेशन के लिए भी डॉक्टर अनुज मित्तल आ जाएंगे थोड़ी देर में DDU से. ट्यूमर्स के बारे में डॉक्टर सोलंकी से, डॉक्टर विकास गुप्ता से आप पूछ सकते हैं. या ट्यूमर्स से एपिलेप्सी तो उसका क्या करना है डॉक्टर निलेश बताएंगे. ट्रोमैटिक इंजरी अगेन न्यूरोसर्जन बताएंगे आपको. अल्जाइमर डिजीज के बारे में, इन्फेक्शन, हेडेक डॉक्टर सुमित सिंह ने कहा जैसे उनसे पूछिए आप. और स्लीप डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पूछ सकते हैं. ये सबसे बड़ा कारण है डिसेबिलिटी का पूरे वर्ल्ड में, जो स्ट्रोक या जो ब्रेन डिजीज होती है. इसका हमें लुक आफ्टर करना है ताकि ना हो. इट इज टाइम टू एक्ट. लेट अस गेट टुगेदर टू प्रमोट बेटर ब्रेन हेल्थ ग्लोबली. ये चीजें आपको कुछ करनी है, कुछ अवॉइड करनी है. रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी अपनी ईटिंग हैबिट्स रखिए, अवॉइड करना है टोबैको, ड्रग्स और अल्कोहल को, रीडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ऑल प्रमोट ब्रेन हेल्थ. तो अगर आप ये सब करेंगे तो इससे काफ़ी सारे तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. मैं देखता हूँ अगर प्रेसिडेंट सर हैं लाइन पर तो मैं उनसे आपकी पहले मुलाकात कराता हूँ.
अपना लैन को लूज हो गया। मुकेश लैन देखो अपना लूज तो नहीं है। अभी तो आ रहा था लैन देखो ठीक तरह से कुछ हिला ना दिया। चलिए जब तक कनेक्शन होता है मैं आपको उनकी जो 3 मिनट वीडियो उन्होंने भेजी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो इंटरनेट कनेक्शन हाय वासे हेलो Professor Raj Shakir is the president of World Federation of Neurology. He was initially from Iraq and then now he settled. Listen to him what he has to say. I'm delighted to speak. The World Federation of Neurology is a global organization comprising 117 member societies representing their countries. It was established on the 22nd of July 1957. The WFN aim is to foster quality neurology and brain health worldwide. The complexities of the brain and of neurological disorders often becomes a barrier for awareness. Our most important goal with this novel campaign is to present brain health in all its aspects and social dimensions. We aim to alert and inform the public on the मैं थोड़ी देर बंद कर रहा हूँ वो लाइन पे आ रहे हैं मैं पहले उनको सुन लेता हूँ। Hi Raj. Hello, can you? There are some colleagues of mine. Thank you. Well, Professor Mahendrata, thank you very much for this opportunity. It is always very important for me to speak to not only to fellow neurologists, neurosurgeons and psychiatrists, but to patients' groupings. And patients' organizations and foundations are really very crucial for us because after all what we are doing now is to promote neurology, promote brain and brain health among the general public, but more importantly among individuals who are interested or who have patients with neurological diseases, and they are the backbone of our efforts across the world. Your presence is very important to us on this day to promote the brain initially, and secondly to make the public and policy makers aware of the importance of brain diseases and the devastating burden they put, I am sure, on many of you and your families. Trying to understand the intricacies and complexity of the brain is a difficult subject, as you can imagine. After all, it's the most complex organ in the whole body. Without its health, then many other organs may function, but their function will not make them express themselves in the way that we would like human beings across the world to function. So the brain promotion is important. Its function, its structure, its mystery, its complexity are obvious to all of us. And we endeavor across the world to help each other in understanding when the brain goes wrong, to try to help individuals with such illnesses, disorders, or birth defects that have caused these difficulties in brain function. This is a rather general way, but specifically it would be that your participation and help and your pressure on decision makers in government, local government,
national government, and I know of many projects in India where local government and local patients' organization are doing excellent work in many parts in the south and the north of India. And I am honored and delighted to be a guest of the Indian Neurological Academy meeting in Chandigarh, which will be in November. And I look forward to, I would like to come to India as much as I can. And this year I will be with you in November. And perhaps there will be an opportunity to meet a patients grouping from India who are so important for us neurologists to connect to and to try to learn from you of your difficulties, of your needs, of your requests for us to help as best as we can. This is the first World Brain Day. Our federation was born on the 22nd of July 1957, and we would like to celebrate the brain and point out the importance of not forgetting and emphasizing on neurological disorders in all their aspects, whether they are from neurophysicians to neurosurgeons or psychiatrists. And this is why we have the combination of what we call the World Brain Alliance, which is an alliance of all those dealing with diseases of the nervous system. So thank you again for coming today, and I am quite happy to be with you, and if you need me to answer any questions or queries, I'll be more than happy to do so, and perhaps we can meet face to face with some of you again when I'm in India in Chandigarh in November. This is the first time we World Brain Day celebrate कर रहे हैं और डॉक्टर मेहदी हसन ने पूरी दुनिया को एक जगह पे जमा कर दिया है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पेशेंट, हमारे डॉक्टर सब यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली इस वर्ल्ड ब्रेन डे का फंक्शन ये है कि हम पूरी दुनिया में इस मैसेज को प्रमोट करें कि हम अपने दिमाग की सेहत को बेहतर बनाएं और हम अपने दिमाग को बीमारियों से बचाएं। बीमारियों का इलाज तो मौजूद है दिमाग की, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ये है कि दिमाग की ज़्यादातर बीमारियां ऐसी हैं कि जिससे बचना मुमकिन है। वासे एक मिनट पहले अपनी इंट्रोडक्शन दे दो। वासे, आई हैव गिवन बट यू गिव योर इंट्रोडक्शन। वर्ल्ड ब्रेन डे आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि हम अपनी ब्रेन हेल्थ को प्रमोट करें। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर मेहदी हसन ने आपको बताया कि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन हम उनमें से सिर्फ 10 अरब को यूज करते हैं। और अगर हम उसको ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा उसका बेहतर इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा उसको पॉजिटिव कामों में यूज करेंगे, तो हमारे ब्रेन की कैपेसिटी और ब्रेन की हेल्थ बढ़ जाती है। हमें अपने ब्रेन की हेल्थ बढ़ाने के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए, उनमें सबसे पहली चीज़ है रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरे बैलेंस डाइट का इस्तेमाल, तीसरे टोबैको और टोबैको की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, पान, तंबाकू और चूइंग टोबैको, अल्कोहल और इस तरह की एडिक्शन से उनसे परहेज करना चाहिए और करना चाहिए। रीडिंग जो है वो हमारे और आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है, उसके नतीजे में दिमागी बीमारियों के अंदर से रिकवरी बेहतर हो जाती है और दिमागी बीमारियों से बचाव भी मुमकिन होता है। इसी तरह सोशलाइजेशन, नेटवर्किंग, लोगों से मिलना जुलना और दुनिया की सारी चीज़ों का स्टडी करना, ह्यूमैनिटीज़ को, आर्ट को, लिटरेचर को, इन चीज़ों के बढ़ने से इंसानी ब्रेन की जो क्रिएटिव कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो मैं अपने जितने लोग हैं, मेरे कोलीग्स हैं और जो पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उसको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड ब्रेन डे है, ये हमारे लिए है और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी नई नस्ल है, पूरी जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये फ्यूचर में अपने ब्रेन को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे एशियन रीजन के लिए और पूरी दुनिया के लिए जो है वो हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को एक अच्छी जगह बना सकें और एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकें और इस साइंस और टेक्नोलॉजी को और बीमारियों के इलाज को जो है प्रमोट कर सकें। तो होपफुली ये अवेयरनेस फैलेगी लोगों में, मीडिया के जरिए से, गवर्नमेंट के तरफ अवेयरनेस पैदा होगी। उम्मीद है कि हमारे अपने रीजन में जो दिमाग की बीमारियां हैं उनकी डायग्नोसिस भी बेहतर हो जाएगी और उसका इलाज भी बेहतर तरीके से हो सकेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच माय ऑल पेशेंट एंड विश टू आपका शुक्रिया करना चाहते हैं वासे। फर्स्ट टाइम
Nilesh, Dr. Solanki, so you have come, which is environment friendly and 300 bedded. The presentation, short 10 minutes, I'll show you through pictorial, is introduction, infrastructure and commissioning, vision and mission of the institution, facilities available, and what's the way forward. I'll not read each and every slide. Now, OPD services we have enhanced by 30%. Ramps and lifts have been made compatible for differently able persons, which is very important. We have started a novel concept of vital station in the OPD, which is not existent in many of the government institutes. We started barcoding in OPD, like I can say GB Pant, which is my 50 years old institute, still doesn't have barcoding in the OPD. Separate OPD and pharmacy counters, especially for senior citizens and differently able. ICTC, which is made functional on 9th April 2013. I joined here on 4th January last year. Biometric attendance system, CCTV surveillance existing for last 5 years here. Another facility which often we government employees being neglected. We have special for DGHS employee and CGHS facilitation center. Neurodiagnostic zone, I show you our EGs are completely paperless. 140 pages, and I also report on the CD or DVD. I don't give any paper report. Give one copy to the patient. And then NABH quality certification we have got, which I am proud that was the first hospital in the country to get NABH quality certificate, labs, not the hospital, labs. And we have often patients keep on going from one station to the other. So here we have central trolley station. This central trolley station patient go for, Anshu will remember in GB Pant or Anand, if somebody needs a wheelchair or go to DMS, go to this room, but we have made it downstairs, you must have seen, near the information booth. Then we have HIMS in pipeline, MRI, MDPL, and public awareness and education series we have done with USA, Australia and UK. On 18th February, we did a video conference with University College London Queen's Care. Two colleagues spoke from there and one from Monash University, Australia. Now selection management, engagement and retention of quality is one of faculty. So we have got special scale that is like All India Institute of Medical Sciences. Collaboration with Institute of National and International, maybe I go to Dr. Raj Shakir or WASE for collaboration with our institution and establishment of these facilities. I'll show through some pictorial. This is my plan when I joined this, that infrastructure building is already there, some manpower is there, more is we will be recruiting. Recruitment, selection, motivation and training of physician, manager, super specialists. Then research constantly improving, and as Nilesh said, later on maybe stroke unit, epilepsy center, movement disorder, division and center, not clinics. That is our plan, and then is advanced. On this we have already done like paperless, all EGs are paperless, and we have done number of academic activities, and we have outreach program like this. This is our OPD data, and you will see here there is a rise in 30% in 2013, and this is projected another 120,000 next year, another 20% rise. And this is breakup of neurology, and this is, I will not go in detail, laboratory data. Now this is the barcoding. In my place, it takes 30 seconds for any follow-up patient to register when he comes for follow-up. New patient takes 1 to 2 minutes. So that's the big advantage. Soon we'll have labs also barcoded and all will be connected. And maybe prescription behavior will also be through the computers and will be paperless. Centralized sample collection, it was all distributed in different places, so we brought down to one place. Vital station is a concept which I will spend 30 seconds. Each and every new patient who comes has to go through blood pressure, pulse rate, blood sugar, weight, height and BMI. This is mandatory. And without it, no new patient is seen. And this also we are now collecting a data, hopefully we'll have 5,000 patients, out of which many are being detected diabetic and hypertensive. And second is when patient comes, they ask for, doctor, what is this BMI? Why my BMI is 33? What can I do? Then we have brought neurodiagnostic zone, we call it, under one umbrella. Rehabilitation center was on different floors, we brought under one umbrella. Then ICTC, and we have huge parking. That's a major problem in the country. We have 200 to 250 cars which can accommodate in this parking. Then another, which is my, I can say to some extent, intellectual property right. You can see a seat here. When patients go in the lift, there is a seating arrangement here. Patient can sit to go to 5th floor, they are breathless,
They are handicapped, so they can sit. So this you would not have seen in any part of the country in any way. So this is, please, if you have to make it, please let me know. Then we have differently able, compatible, bigger empowerment for the canteen. Our emergency is getting this, almost ready, equipment come, we will start this. This is the central registration which will go down on the ground floor, which will be LAN connected by the cable, and this will be central police station. Another novel concept we have brought. Here average age of patient who visit is around 55. You will be surprised because there are a lot of retired people here. So what we did for very senior citizens, as a pilot project we have started, above the age of 70 years, DGHS employee and CGHS employee are seen on priority. And later on we are going to have neurologist, cardiologist, gastroenterologist, nephrologist in one room where patient comes, not the doctor is available, not that patient has to come, go to different specialties. So we are trying that. Maybe by that next time when you come, you will have this. On 17 January, we had a professor of neurology from Keck University, USA. When he came, he said, what should we speak? I said, don't speak on